Hi kids, we are starting a new chapter number 3, subtraction of numbers from the book Maths 3. Subtraction means taking away some objects or numbers from a group. तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ ऑब्जेक्ट या नंबर्स को एक ग्रुप में से टेक अवे करना, ले लेना. ओके, द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द मिन्यूएंड. जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको मिन्यूएंड कहते हैं. द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड. और जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सब्ट्राहेंड कहते हैं. The result of subtraction is called the difference. Minus sign is used for subtraction. जो result होता है subtraction का उसको हम difference कहते हैं और minus sign का हम use करते हैं subtraction को show करने के लिए. Then here is an example. 54 which is minuend, then minus sign, then 42 which is subtrahend. Okay. Then 12 is the difference. Got it? Thus, we can say that the difference of 54 and 42 is 12. Okay? Then properties of subtraction. First, if we subtract 0 from any number, the difference is the number itself. तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 में से subtract करते हैं तो answer will be the same number, the number itself. Okay? For example, if we subtract 45 minus 0, we'll get 45, the same number. Another example, 85 minus 0, we'll get 85. Okay? Now second, if we subtract a number from itself, the difference is always 0. अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से subtract करते हैं तो answer is always be 0. For example, 15 minus 15 is equal to 0. Then 75 minus 75 is equal to 0. Also, 105 minus 105 also equals to 0. Okay? We have already learned the subtraction of 3-digit numbers with and without borrowing. Let us revise some of them. तो हमने अभी subtraction सीख लिया है 3 digits तक with और without borrowing. अब हम उन concepts को revise करेंगे. Okay? Subtract 654 from 897. Okay. Subtraction of ones equals to 7 minus 4 equals to 3 ones. First we have to arrange them column wise. Okay. We have arranged 897 and 654. 7 at ones, 9 at tens, 8 at hundreds, then 4 at ones, 5 at tens, 6 at hundreds. Okay. First we have to subtract ones digit. Okay, so if we subtract 4 from 7, we'll get 3 ones. Okay, then write 3 at the ones place. Ones place पर हमने लिख दिया है. Subtraction of tens. 9 minus 5 equals to 4 tens. Write 4 at the tens place. फिर tens place पे जो digit है उनको subtract करना है. 9 में से 5 को subtract किया तो 4 आया. Okay, और हमने 4 यहाँ पर write कर दिया. Subtraction of hundreds. 8 minus 6 equals to 200. Write 2 at the hundreds place. फिर 8 में से 6 subtract किया will get 2, right? और 2 को हमने 100 place पर लिख दिया. Now thus 897 minus 654 will get 243. Okay? Then subtract 395 from 624. Okay? Now subtraction of ones, 4 ones is less than 5 ones. So we cannot subtract 5 from 4. Hence borrow 1 10 from 2 tens. Then we get 1 10 plus 4 ones equals to 10 ones plus 4 ones is equal to 14 10 ones. Okay. Now 14 ones minus 5 ones equals to 9 ones. Write 9 at the ones place. So what is written here we'll understand. So first we have arranged the numbers. Okay, 624 then minus 395. Okay, अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 and 5. So we can't subtract 4 from 5, right?
हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो ऊपर डिजिट होती है वो बड़ा नंबर चाहिए होता है, यहाँ पर क्या है, छोटा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टेंस प्लेस है यहाँ से बोरो कर लेंगे। जो 2 है यहाँ पर ये भी छोटा है, अगेन इधर से भी बोरो नहीं कर सकते, राइट। तो हम यहाँ से बोरो करेंगे 6 से, ओके। तो 6 को कट किया, हमने 1 लिया तो यहाँ पर 5 आ गया, फिर बोरो किया यानी कि ये 12 बन गया था। अब हमें इधर के लिए भी चाहिए, तो 12 क्या है, 11 बन गया और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ गया, ओके। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 9, और हमने 9 यहाँ पर लिख दिया। गॉट इट। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस। फ्रॉम द टेंस प्लेस वी हैव टेकन 1 10 फ्रॉम 2 10s, बट 1 10 इज less than 9 10s, so we cannot subtract 9 10s from 1 10. Borrow 100 from the hundreds place, then we get 100 plus 110 equals to 10 10s plus 110 is equal to 11 10s. Now 11 10s minus 9 10s equals to 2 10s. Write 2 at the tens place. तो अब हमने क्या किया था, यहाँ से हमने बोरो किया था तो ये 12 था और वो 11 बन गया था, हमने इधर दे दिया था। तो 11 में से, दिस इज द नंबर, 11 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें सो विल गेट 2, राइट। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स, सिंस वी हैव टेकन 100 फ्रॉम 600s, only 500s remain. Then we get 500s minus 300 which is equal to 200s. Write 2 at the 100 place. Thus 624 minus 395 equals to 229. Then हमने यहाँ पर बोरो कर दिया था, ठीक है। हमारे पास 5 बचा ओनली। सो 5 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे we'll get 2, okay. Then the final answer is 229. Okay, then exercise 3A. Now subtract the following. We'll subtract these questions, okay. A part, now 8 minus 6, we'll start from 1's place, right. 8 minus 6, we'll get 2. Then 5 minus 2, we'll get 3. Then 7 minus 4, we'll get 3. The answer is 332. Then B part. If we subtract 2, 0, we'll get 2, the same number. Then 4 minus 1, we'll get 3. Then 6 minus 3, we'll get again 3. The answer is 332. Now the remaining parts you can do by yourself, okay? Then subtraction of 4-digit or 5-digit numbers without borrowing. Okay, now always remember that write the smaller number under the larger number in columns. Subtract column wise. Subtract ones from ones, tens from tens, 100 from hundreds and 1000 from 1000. हमें हमेशा याद रखना है कि जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के नीचे ही आना चाहिए, ओके। अगर ऊपर होगा तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। Then also we have to subtract column wise. Means ones को ones में से subtract करना है, tens को tens में से, hundreds को 100 में से और thousands को 1000 में से, okay? Now subtract 4356 from 7878. Okay, so this is how we write the number column wise, okay. Then subtracting ones, 8 minus 6 equals to 2 ones. 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। सो अगर हम 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया विल गेट 2, ओके, विल राइट हियर। देन सब्ट्रैक्टिंग 10, 7 minus 5 equals to 2 10s. 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला हमें, ओके। देन सब्ट्रैक्टिंग hundreds, 8 minus 3 equals to 500s. फिर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया विल गेट 5, राइट। देन सब्ट्रैक्टिंग 1000, 7 minus 4 3000. 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3000, राइट। नाउ राइट 2 ones, 2 tens, 500s and 3000s in their proper columns. फिर उसके बाद हमें प्रॉपर कॉलम्स में
उनका फाइनल आंसर लिख देना है, जो कि हमने लिख रखा है यहाँ पर. ओके, थस 7,878 minus 4,356 is equal to 3,522. Okay, subtract 63,252 from 98,576. Again, we have to arrange both of the numbers column wise. Okay, then 6 minus 2 equals to 4 ones. So we have to again start with the ones, right? 6 में से 2 किया, 4 आ गया. Then 7 minus 5 equals to 2 tens. 7 में से 5, 2. Then 5 minus 2 equals to 3 hundreds. 5 में से 2 subtract किया, then we'll get 3 hundreds, right? Then 8 minus 3 will get 5,000. 8 में से 3, 5. Got it? Then 9 minus 6, 3, 10,000. 9 में से 6 subtract किया, 3, right? Write all these digits at their proper places. हमने सारी digits लिख रखी है. Okay, thus 98,576 minus 63,252 is equal to 35,324. Okay, then checking answer. For checking the answer, we add the answer to the smaller number. If the obtained sum is equal to the greater number, we say that the answer is correct. Now check your answer in the above example. तो आंसर को चेक करने के लिए जो हमारा आंसर आया है उसमें स्मॉलर नंबर को ऐड कर देते हैं. ओके, और जब उनका सम करते हैं तो वो उसी नंबर जो लार्जर नंबर है उसके इक्वल आना चाहिए. ओके, तो अब हम आंसर को चेक करेंगे. ओके, सो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें ये आंसर मिला था, राइट? तो जो आंसर है हमने यहाँ लिखा और स्मॉलर नंबर ये था, राइट? तो हम यहाँ पर उसे ऐड कर रहे हैं. अब ऐड करना हमें आता है कैसे? अगेन विल स्टार्ट विद वंस प्लेस. सो इफ वी ऐड 4 and 2 विल गेट 6, 2 and 5 7, 3 and 2 विल गेट 5, 5 and 3 8, 3 and 6 9. So is it equal to this number? Yes, it is. So it means this is the correct answer. It shows that the answer is correct. Okay. Then we have exercise 3B. Subtract the following and check your answer. Now we have to subtract these questions and also check our answers as well. Okay. So A part. We'll start from ones place, right? 6 minus 4 will get 2. Then 5 minus 2 will get 3. After that 6 minus 3 will get 3. Then 7 minus 4 will get 3 again. Okay, so this is the answer, which is 3,332. Right, now we need to check the answer as well. So how we check the answer? I'll do it here. Okay, checking part. So first we have to write this number, which is the answer. Okay. Then we have to write the smaller number. This is the smaller number, 4,324, right? So I'll write it here. Then what we need to do? We need to add them. Okay. So we know how to add the numbers. We'll start from ones place, right? So if we add 2 and 4, we'll get 6. Then 3 and 2, 5. Then 3 and 3, 6. Then 3 and 4, 7. Is this number equal to the larger one? Yes, it is. So it means the answer is correct. Okay, so you need to check the answer. That's how I have done. Okay, so you can attempt the remaining parts by yourself. Okay, those are the similar ones. Okay, subtraction of 4-digit or 5-digit numbers with borrowing. Okay, subtraction 3,794 from 6,283. So first we have to arrange these numbers. Okay,
So this is how we have arranged them. Then these are the steps we have to follow. Subtracting ones. Since 3 is less than 4, we cannot subtract. So we borrow 1 10 from 8 tens. Now 1 10 plus 3 ones equals to 10 plus 3 is equal to 13 ones. Also 13 ones minus 4 ones equals to 9 ones. Write 9 at the ones column. Then subtracting tens, after borrowing 1 10, there are 7 tens in the tens column. We cannot subtract 9 tens from 7 tens. We borrow 100 from the hundreds column. Now 100 plus 7 tens equals to 10 plus 7 is equal to 17 tens. Also 17 tens minus 9 tens equals to 8 tens. Write 8 at the tens column. Now we'll understand what does here written. Okay. So first we have to start with the ones place, right? So we have to subtract 3 minus 4. But we can't subtract because 3 is smaller than 4, right? So we have to borrow. From where we can borrow? We can borrow from this one. No, we can't borrow from this one because 8 and 9. Again 8 is smaller than 9. So here also we can't borrow. Then can we borrow from here? Again no, we can't borrow from here. We can borrow from here. Okay, so we'll borrow from here. So we'll get 5 here. Then it will make 12. Then we have to take the borrowing up till here. So यहाँ से भी हमने कट किया तो हमें 11 मिल गया. Then यहाँ पर वो आया 18 बन गया. तो हमें इधर से अब लेना पड़ेगा. तो 18 को भी कट किया, वो 17 बन गया. अब यहाँ पर हमें बोरोइंग मिल गई तो वो 13 बन गया. अब 13 में से 4 गए 9. Got it? Then after that 17 में से 9 गए 8. Then 11 में से 7 गए, answer is 4. Then 5 में से 3 गए 2. This is how we subtract with borrowing. Okay? Now subtracting 100, since we have taken 100 from 200, only 100 remains, but 700s cannot be subtracted from 100, so we borrow 1000 from the 1000 column. 1000 plus 100 equals to 10 plus 1, 1100s. Now 11 minus 7 equals to 400s. Write 4 at the hundreds column. I have already explained this part, right? Then subtracting thousands. Since we have taken 1000 from 6000, 5000 remain in the thousands column. Subtracting, we get 5 minus 3 equals to 2000. Write 2 at the 1000 column. Thus 6283 minus 3794 will get 2489. I have already explained this part as well. Okay, then now find the difference between 95,643 and 68,975 and check your answer. To follow the same pattern, we subtract the given numbers as वही same pattern follow करके हम subtraction करेंगे. So सबसे पहले arrange कर लेना है column wise. Then we have to look at these numbers. क्या 3 5 में से subtract हो सकता है? No, because 3 is smaller than 5, so we have to take borrowing, right? Can we take here borrowing from here? No. From here? Again no. From here? Again no. We can take borrowing from here because 9 is greater than 6. So if we take borrowing from here, we'll get 8 here, then 15. We'll cut here 14, then again 16. Cut here, then 15, then 14. It will make 13. Again यहाँ पर हमें अब 13 मिल जाएगा. ओके, तो 13 में से 5 गए 8, then 13 में से 7 गए 6, 15 में से 9 गए 6, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 6 गए 2. So this is the final answer. Thus 95,643 minus 68,975 equals to 26,668. Okay. Now checking answer. अब आंसर कैसे चेक करते हैं? सिमिलर मेथड है जो हमने फॉलो किया था. जो आंसर आया है उसको हमें ऐड करना है स्मॉलर नंबर में. So here we are adding and we'll get the
larger number. Okay, so if we are adding 8 and 5, we'll get 13. 1 is carried over. And if we add 1, 6 and 7, we'll get 14. Again, 1 is carried over. Then 1, 6 and 9 will make 16. Again, 1 is carried over. Then 1, 6 and 8 will make 15. 1 is carried over. Then 1, 2 and 6 make 9. So this is how we get. Is this number equals to this number? Yes. So it means this answer is correct. So this is difference, which is the answer. This one is smaller number and this one is the greater number. Okay, I have already explained this thing. When we add difference, which is answer, and the smaller number, we get the greater number, that is 95,643. Thus the answer is correct. Okay. Now exercise 3C. Find the difference and check your answer. Okay. So A part is given. Okay. So we have to start subtracting from ones place. So we have to check 0 and 9. 0 is smaller than 9. So we can't subtract this, right? We have to borrow. Can we borrow from tens place? 0 and 4. No, we can't borrow because again 0 is smaller than 4. We can borrow from 100 place. Again no, because 0 is smaller than 8 again. Then we can borrow from 1000 place. Yes, we can. So we'll cut here and write instead of 2, 1. Okay, 1 is the number. Now here we have 10. We have to borrow till here, right? So it will make 9. Then again 10 here. Then 9. Then 10. Okay. Now if we subtract 10 from 9, we'll get 1, right? Then 9 minus 4, 5. Then 9 minus 8, 1. 1 minus 1, 0. And 8 remains the same. The answer is 80,151. Okay. Now we'll do the B part as well. Again, we have to start from ones place and we have to look at the number 0 and 8. 0 is smaller than 8, so we can't subtract. We have to borrow. यहाँ से borrow कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 जो है वो smaller है 9 से. यहाँ से borrow कर सकते हैं? नहीं कर सकते. Again, यहाँ से borrow कर सकते हैं? Again नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर भी इक्वल है. हमें यहाँ पर ग्रेटर नंबर चाहिए होता है हमेशा बोरोइंग के लिए. यहाँ से बोरो कर सकते हैं? यस, वी कैन बोरो फ्रॉम हेयर. ओके, सो इसे हमने कट किया तो यहाँ 2 बन गया, राइट? अब ये यहाँ पर 12 आ गया, 1 बोरोइंग था, तो यहाँ इसे कट किया 11 आ गया, यहाँ पर 12 बन गया. देन इसे कट करेंगे ये 11 बन गया. देन यहाँ 10 बन गया, इसे कट करेंगे ये 9 बन गया. देन यहाँ 10 आ गया. 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 2 गए 9, then 2 में से 1 गए 1. The answer will be 19,702. Now we have to check the answer as well. Okay, so I'll let you know about this one. Okay, I'll do the checking part here. Okay, so first we have to write the difference. Okay, this is the difference, 19,702. Then we have to write the smaller number. Which one is the smaller number? This one or this one? The answer is this one is the smaller number. Okay, so this is 12,498. Now we have to add these numbers. Okay, so if we add 2 and 8, we'll get 10. 1 is carried over, then 1, 0 and 9 makes 10. Again 1 is carried over, 1, 7 and 4 makes 12. 1 is carried over, then 1, 9 and 2 makes 12. Again 1 is carried over, then 1, 1, 1 makes 3.
Now we'll get 32,200. Is this the greater number? Yes, this is the same greater number. It means the answer is correct. The difference is correct. Okay. So you can do the checking part of A part, and the remaining ones you can solve by yourself. Okay. These are some also parts of that question only. You can also do these parts by yourself and checking part as well. Okay. Addition and subtraction together. Okay. Solve 782 plus 426 minus 568 plus 231. Okay. First of all, add 782 and 426. सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, जो नंबर्स ऐड के लिए लिखे हैं इन दोनों को. ओके, सो व्हाट विल गेट 782, 426, 2 and 6, 8, 8 and 2, 10, 1 is carried over, then 1, 7 and 4, 12, 1 is carried over, so we have written 1 here. Okay, then subtract 568 from this sum. जो यहाँ पर sum आया था which is 1208, उसमें से हमें ये नंबर which is 568 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वहां क्या है, माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम दिस नंबर विल गेट 8 minus 8 0. Now 0 minus 6 we have to borrow, so we can borrow from here 0, then 12 makes 11, then 10. 10 में से 6 गए 4, राइट. 11 में से 5 गए 6, then यहाँ 0 आ गया. Right, so we have got 640, right? Then finally add 231 to this difference. अब जो difference आया है उसमें ये वाला number plus का sign है, means we have to do the addition. So हम add करेंगे. So 640 plus 231. We know how to add. 0 में 1 add किया 1, 4 में 3 add किया 7, 6 में 2 add किया 8, right? Now this is your answer. Thus 782 plus 426 minus 568 plus 231 is equal to 871. Okay, word problems, examples. First, what should be added to 43,488 to get 81,900? हम इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 81,900 मिल जाए. Okay. To solve this problem, we have to subtract 43,488 from 81,900. अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस नंबर में से इस नंबर को. ओके, सो हियर यू कैन सी वी आर सब्ट्रैक्टिंग दोज नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज देम कॉलम वाइज. 81,900 minus 43,488. So 0 and 8. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 जो है 8 से स्मॉलर है. सो वी हैव टू बोरो. कैन वी बोरो फ्रॉम हियर? नो. देन कैन वी बोरो फ्रॉम हियर? यस. दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने कट किया तो 8 बन गया, यहाँ पर 10 आएगा, 10 आया, हमने कट किया तो 9 बन गया, देन यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया. ओके, सो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 4 गए 4. गॉट इट? नाउ क्या अब हम 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 3. सो अगेन वी हैव टू बोरो. तो बोरो कहाँ से करेंगे? यहाँ से, राइट. सो इसे कट किया तो 7 बन गया और यहाँ 11 आ गया. 11 में से 3 गए 8 एंड 7 में से 4 गए 3. गॉट इट? Thus 38,412 should be added to 43,488 to get 81,900. This is the answer. Okay. Second, find the difference between the largest and the smallest 5-digit numbers formed using the digits 5, 7, 6, 4, 8. Each digit should be used once only. So हमें difference बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर में, जो कि फॉर्म होते हैं इन डिजिट्स का यूज करके. जो हर एक डिजिट है उनको सिर्फ एक ही टाइम यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ द डिजिट्स आर 5, 7, 6, 4, 8, राइट. द लार्जेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म, जो लार्जेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म होगा वो ये होगा 87,654. नाउ हाउ डू वी फॉर्म लार्जेस्ट
5-digit number, we have to arrange these numbers in descending order without any comma. So we'll get the largest 5-digit number. Okay, then the smallest 5-digit number form equals to 45,678. Now we have to arrange these numbers in ascending order without any comma. So we'll get the smallest 5-digit number. Now their difference equals to, means we have to subtract, right? So 87,654 minus 45,678, we are subtracting here, right? So 87,654 minus 45,678, 4 में से 8 subtract नहीं कर सकते, so we have to borrow. Can we borrow from here? No. Can we borrow from here? No. We can borrow from here. So यहाँ पर हम कट करेंगे तो कितना बन गया यहाँ पर 6 एंड फिर यहाँ 16 आ जाएगा, कट किया तो 15 बन गया, यहाँ पर 15 बना था, कट किया 14 बन गया, यहाँ पर 14 है तो 14 में से 8 गया 6, 14 में से 7 गए 7, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 4 गए 4. Okay, which is equal to 41,976. Okay, now exercise 3D. First, subtract a 4,256 from 18,100. So here we need to subtract. First, we need to remember that we have to write the larger number first, then the smaller number. Then we need to subtract column wise. Okay. So I'll do the answer here. Okay. So this is how we write. Okay. So at ones place we have 0 and 6. 0 is smaller than 6. So we can't subtract. We have to borrow. From 0. Again. Can we borrow from here? No. Because again 0 is smaller than 5. यहाँ से borrow कर सकते हैं? No. क्योंकि 1 is smaller than 2. Then यहाँ से borrow कर सकते हैं because 8 is greater than 4. So यहाँ पर कट किया, यहाँ 7 लिखेंगे, ये 11 बन गया, then 10 आ गया, ये 10 बन गया, 9 and then 10. 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, then 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3, then 1. So the answer is 13,844. This is how you need to subtract. Okay. Then you can do the remaining part by yourself. Okay. Then question 2. Find the difference and check your answer. Difference find करना है इनका और answer को check करना है. Okay. So I'll do the A part. 7,280 and 4,299. Now I'll do the solution here. Okay. So 7,280 and 4,299 minus 0 में से 9 नहीं कर सकते क्योंकि 0 क्या है, छोटा है, स्मॉलर है. So we have to borrow. यहाँ से borrow भी नहीं कर सकते क्योंकि 8 smaller than 9. Then 2 and 2. इधर से भी borrow नहीं कर सकते क्योंकि equal है, हमें greater number चाहिए होता है. Now 7 and 4 यहाँ से borrow कर सकते हैं. तो इसे कट करेंगे, यहाँ 6 आ गया, ये 12, 11 बन गया, ये 18, ये 17 बन गया, then 10, 9. 10 में से 9 subtract किया will get 1, then 17 में से 9 किया will get 8, 11 में से 2 किया will get 9, then 6 में से 4 subtract किया will get 2. Now this is the answer, difference, or you can say. Okay, so now we have to check the answer. Of how do we check the answer? First we'll write the difference. Okay, so 2981. Okay, then we have to write the smaller number which is 4,299 here. Now we have to add them. Okay,
Now 9 and 1, 10. 1 is carried over. So 1, 8 and 9 makes 18. Then again 1 is carried over. 1, 9 and 2 makes 12. Then again 1 is carried over. 1, 2 and 4 makes 7. So is this number equal to the greater one? Yes. It means the answer is correct. Okay. So you can do the remaining part, which is B and C, by yourself. Then we have third question. Solve the following. Okay. So A part 684 plus 293 plus 148. So here you need to add these three of them. Okay. You can do this part by yourself. Okay. Then we'll move to the B part. So 948 minus 589 plus 336. So in this part you need to subtract first. Okay, इन दोनों नंबर को पहले subtract करेंगे, फिर जो आंसर आएगा which is the difference को इस नंबर में ऐड कर देंगे. Okay, you can attempt this part by yourself. Okay, so you can attempt this part by yourself. Okay. Then C, 825 minus 241 minus 140 plus 648. Okay. So in this part, first you need to subtract these two numbers. फिर जो difference आएगा उसको इस number से subtract करना है. फिर जो difference आएगा उसको इस number में add करना है. Okay, this is how you need to attempt this question. Okay. Then D part. We have 245 plus 640 minus 342 plus 102. So in this part you need to add them first, and then the answer which comes, which is the sum, you need to subtract it from this number. Then जो difference आएगा उसमें इस number को add करना है. Okay. Now you can do the remaining part by yourself. Those are similar ones. Okay. Then fourth, write in columns and subtract. Also check your answer. Columns में लिखना है और answer को check करना है. So A part 72,885 minus 43,796. So column wise means you have to write like this. Okay. And then you need to perform the subtraction, and also you need to check the answer. Here I did the checking part. Okay, first you need to write the difference, then the smaller number, then you need to add, then you can check is that the greater number same. Okay, if it is same, then your answer is correct. So you can do this question by yourself. Then fifth, solve the following word problem. Now we'll solve some word problems. A, the sum of two numbers is 87,889 if one of them is 69,880. Find the other number. तो दो numbers हैं, उनका जो sum है ये given है, हमें इतना है, और उनमें से एक number हमें given है, हमें दूसरा number बताना है. Okay, so in this question we have to subtract the sum from this one number to get another number. Okay, so I'll write here. Then you will get the answer after subtraction. Now you can subtract by yourself. Okay. Then B, there are 45,890 students in a school. If the number of boys is 28,978, find the number of girls. एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से इतने बॉयज हैं, हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. सो again in this question, to find the number of girls we need to subtract the total number of students minus 28,978, which is the total number of boys. So you can perform the subtraction by yourself and you will get the answer, which is the number of girls. Okay. Then C, find the difference between the largest and the smallest 4-digit numbers formed using the digits 2, 5, 7, 4. Each digit should be used once only. तो हमें difference find करना है, means we have to subtract, right? And
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में हमें डिजिट्स दी हुई हैं, इनसे हमें फॉर्म करनी है 2, 5 एंड 7, 4. हर एक डिजिट को एक ही टाइम यूज करना है. ओके, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा? फॉर स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू राइट दीज नंबर्स और डिजिट्स इन ascending order. Okay, so first I'll write 2, then 4, 5, 7. So this is the smallest number, 4 digit smallest number. Okay, then we have to write the largest number. Now for largest number we have to write these digits in descending order. So 7, then 5, then 4, 2. Now you need to find the difference. Okay, so 7, 5, 4, 2 minus 2, 4, 5, 7. So you can subtract these two numbers and you will get the difference. You can subtract by yourself. Okay, then D. There are 16,400 bags of wheat in a godown. If 2,948 bags are sold, how many bags are left in the godown? तो 16,400 बैग्स है वीट के गोडाउन में. अगर इतने सेल हो गए तो कितने बचे गोडाउन में? द बैग्स लेफ्ट इन गोडाउन वो फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल बैग्स में से जितने सोल्ड आउट हो चुके हैं. ओके, सो 16,400 माइनस 2,948. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द आंसर. ओके, यू कैन सब्ट्रैक्ट बाय योरसेल्फ. Then E, there are 16,870 sheep in a farm. Out of them 9,875 are sold. How many sheep are left in the farm? 16,870 sheep थी एक फार्म में और उनमें से इतनी सोल्ड हो गई. हमें बताना है कितनी बच गई. So whenever there is the word left, difference, okay, so always we do subtraction. So again here we have to subtract 16,870 minus 9,875. After subtraction, you will get the answer. Then F, 2 persons donated a total sum of rupees 99,000 for tsunami relief fund. If one of them donated 65,425, find the donation of other person. 2 लोगों ने मिलकर इतना सम डोनेट किया सुनामी के लिए और उनमें से एक पर्सन ने इतना सम डोनेट किया तो दूसरे ने कितना डोनेट किया. ओके, अगेन वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट ओवर. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 99,000 फ्रॉम 65,425. ओके, देन G part, the sum of two numbers is 80,894. If one of them is 69,750, find the other number. तो 2 नंबर का सम हमें गिवन है और उनमें से एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है. सो इन दिस क्वेश्चन एज वेल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 69,750 फ्रॉम 80,894 will get the answer. Okay. Now objective skill multiple choice question MCQs. Take the correct option. First, what should be subtracted from 777 to get 444? क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 444 मिले? We have options: A 333, B 222, C 444. The correct answer is 333. Okay. Then second, 1 less than the greatest 4-digit number is dash. We have option A 1000, B 9998, then C 9910. तो greatest 4-digit number is 9999. उससे 1 less means -1. So we'll get 9998. Okay. So B part is correct. Then third, 5,000 minus 3,000 plus 100 equals to, which is question mark. We have options A 3010, B 2001, C 2100. So if we subtract 5,000 from 3,000, we'll get 2,000. Then add 100. 2,000 plus 100 will get 2,100. So C option is correct. Then fourth,
3410 minus 210 plus 1000 is equal to dash. We have options A 3500, B 4200, C 3610. तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 210 को 3410 से, we'll get 3200, and if we add 1000 in it, we'll get 4200. So B option is correct. Then experiential learning, activity zone, aim. The students learn to use the number grid to do addition and subtraction. स्टूडेंट्स को नंबर ग्रिड का यूज करना पता चलेगा कि वो उससे कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. इस एक्टिविटी का यही एम है. ओके. Then required materials. Each student is given 2 sheets of paper, one containing the number grid from 1 to 100 and a worksheet with questions that relate to the grid. तो हर एक स्टूडेंट को 2 शीट्स ऑफ पेपर दिए जाएंगे. एक शीट ऑफ पेपर में नंबर ग्रिड होगी 1 to 100 जिसमें नंबर्स होंगे, और एक वर्कशीट होगी जिसमें क्वेश्चन होंगे जो कि रिलेट करेंगे ग्रिड से. ओके. देन देयर इज द प्रोसीजर. The teacher first goes over the question that relate to the worksheet and elicits the answer to the question by asking the students to discuss what happens when they move along the number grid along a row column. The students are then given time to enter their observations. तो सबसे पहले टीचर जो है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगी, रिलेट करेगी वर्कशीट के साथ. ओके. तो कुछ क्वेश्चन का आंसर बताएंगी, मतलब स्टूडेंट्स को समझाने के लिए. ओके. और डिस्कस करेंगी कि क्या होता है. फिर स्टूडेंट्स को टाइम देंगी ताकि वो खुद ऑब्जर्व करें. ओके. Then the teacher then demonstrates the use of the grid to do a simple addition sum without carryover and a simple subtraction sum without borrowing. Following this, the students may work individually or in groups to solve the problems given below. तो फिर फाइनली टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि कैसे हम नंबर ग्रिड का यूज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर और सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. ओके. और ये जो हो सकती है एक्टिविटी वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके. So this is how a number grid looks like. Okay. Then first choose the correct answer. A, when you move from left to right along a row, the numbers increase/decrease in steps of 1/10. Then B, when you move from right to left along a row, the numbers increase/decrease in steps of 1/10. Then C, when you move from top to bottom along a row, the numbers increase/decrease in steps of 1/10. Then D, when you move from bottom to top along a row, the numbers increase/decrease in steps of 1/10. So you need to answer these questions while you are doing this activity. Okay. So you can do the answer of this question in your class. Okay. Then second, add and subtract using the number grid and write your answer. Then you need to subtract and add some questions given while you are performing the activity. So these are the questions: 29 plus 60, then 67 plus 21, 34 plus 53, 89 minus 7, 58 minus 24, and 97 minus 50. Okay. Understood? So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.